तो विधि तुमने ये पूरा सॉल्व नहीं किया ना? नो सर। तो हम वो पीडीएफ ही कर लेते हैं फिर सॉल्व, फिर बचे तो। या फिर कुछ और टॉपिक करना है? ये पीडीएफ सॉल्व करना है मतलब क्या करना चाहते हो फिर ये डिसाइड कर लेते हैं। सर पीडीएफ हम एक बार घर पे पहले ट्राई कर लेंगे। ओके, तो फिर हम वो कर लें, क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो लास्ट चैप्टर बचा है। यस सर। ओके चलो। So next is solution of triangle. Sometimes this chapter is also called as properties of triangle or solution of triangle. So here we will use few terms. Terms are capital ABC is generally used to represent angles. Small ABC is used to represent sides opposite to these corresponding angles. Capital R represents circumradius. Small r represent inradius. S represents semi-perimeter. Delta represents area of triangle ABC. And R1, R2 and R3 represent x radii opposite to angle AB and C respectively. So R1 is x radii opposite to angle A, R2 is x radii opposite to angle B, and R3 is x radii opposite to angle C. So these are the basic terms which you should know what they corresponds. So then there are few properties, few formulas. The first one is sine rule. And that is A by sine A is equals to B by sine B is equals to C by sine C is equals to 2R, where capital R is circumradius. So, do I need to prove this? Anyone wants to prove of this result? No sir. So next is cosine rule. And cos A is given by B square plus C square minus A square by 2BC. Cos B is, similarly cos B will be A square plus C square minus B square by 2AC, and cos C is A square plus B square minus C square by 2AB. Then projection formula. हाँ, किसी फॉर्मूले का किसी को प्रूफ चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं उसका प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तुम्हें बार बार पूछ नहीं रहा हूँ, ये किसी को चाहिए होगा तो फॉर्मूले का ना, तो उसका पर्टिकुलर बोलना, मैं उसका लेकर प्रूफ कर दूंगा। फिर projection formula. And that is A is equals to B cos C plus C cos B. B is equals to A cos C plus C cos A. And C is equals to A cos B plus B cos A. Next is Napier's analogy. Napier's analogy. So tan A by 2 is equals to B minus C by B plus C. Cot, नहीं मैंने कुछ गलत लगा थी ना, यहाँ पे tan B minus C by 2 is equals to B minus C by B plus C cot A by 2.
Similarly, if I write tan, suppose if I write here C minus A, in that case, we have to write the side as C minus A by C plus C. So if you write here B minus A, suppose it will be B minus A by B plus A. And what, so here we are using angle C and angle A. So now what is left? We have to write it in the form cot B by 2, like this. So everyone is clear with this theorem, this property, axiom, Napier's analogy? Yes, sir. Then comes half angle formulas. With area of triangle. So area of triangle delta is equals to RS. Delta is equals to ABC by 4R. Delta is equals to half AB sine C, or we can write half BC sine A, or we can write half AC sine B. Delta is equals to root over S, S minus A, S minus B, S minus C. Then half angle. Sine A by 2 is equals to root over S minus B, S minus C by BC. Sine B by 2 will be root over S minus A, S minus C by AC. Sine C by 2 is equals to S minus A, S minus B by AB. Cos A by 2 is equals to root over S, S minus A by BC. Cos B by 2 is equals to root over S, S minus B by AC. And cos C by 2 is root over S, S minus C by AB. So now tan A by 2. Tan A by 2 is simply sine by cos. So we need to divide these two terms. So when we divide these two, we'll get S minus A, S minus B. No, A will have, I think, BC. S minus B, S minus C by S, S minus A. So now what we can do here, so this is the one formula which is quite a very complex one. So if we multiply numerator and denominator by S, S minus A, inside this root, if we multiply by S, S minus A, so numerator will become delta and denominator will become S into S minus A. But if we multiply numerator and denominator by S minus B, S minus C, so numerator will become S minus B into S minus C and denominator will become delta. So we can use these formula also, because sometimes this is very easy to use, delta by S minus A. I always prefer this formula, delta by S, S minus A. So ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था इक्वेशन में ना, किसी इक्वेशन में. So tan B by 2 will be similarly root over S minus A, S minus C by S, S minus B. And we can write it as delta by S, S minus B, or S minus A, S minus C by delta. Similarly, cot C by 2. So everyone is clear how to what will you cot C by tan C by 2. Cot C by 2 उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा. वैसे tan C by 2 पता है तो cot C by 2 का फॉर्मूला भी हमें पता है. सब लोग क्लियर है सारे हाफ एंगल फॉर्मूलास? Yes, sir. Sir, आपने delta is equal to half AB sin C कैसे लिखा था? Delta is equal to half AB sin C. So this is a triangle ABC. Now we can write area of triangle is half base into height. So base is A, height, this we can write as, see, this line is angle, this is C, this angle is B. C cos B will be
horizontal component, and C sin B will be its vertical component. So C sin B also we can write as B sin C also, we can write C sin B. So ये clear है, समझ में? Yes, sir. So half angle formula, and then देखो इतने तो जितने मैंने फॉर्मूले हमने लिख लिए ना, ये बेसिक फॉर्मूलेज है जो हमें याद रखने। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है एमएन थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वो मैं बता दूं एमएन थ्योरम भी। Yes, sir. So now next is MN theorem. MN theorem. So MN theorem में क्या होता है कि डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। This is triangle ABC. If any line through any of these vertex intersect opposite side, let's say it intersected D, which divides BC in M ratio, and this is just ratio, this is not length. BD can be M into X, then BC will be N into X. This is just ratio. Then we have this theorem as M plus N cot theta, and theta angle will represent this. Angle theta. So opposite to M. Theta angle is, so if this is M, this is theta. If this will be M, then this will be this angle will be theta. Theta I always consider opposite to M. So M plus N cot theta is equals to M plus N cot theta is equals to this angle is suppose alpha and this is beta, then one relation will be M cot alpha minus N cot beta. And there is one more relation, M plus N cot theta is equals to then N cot B then that will be ये प्रूव कर लेते, इतना यूज भी नहीं तो मुझे याद नहीं, ये किसी का पैकेज है, पैकेज में देखो इसका क्या है सेकंड फॉर्मूला। इसका एक और आता है ना, यहाँ पे अल्फा और बीटा के बाद ए बी एन सी के टर्म में भी फॉर्मूला है, ये पैकेज में देखो क्या फॉर्मूला है, जैसे है पैकेज। वैसे तो इसी से मैं उसमें दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मुझे ये वाला याद है, तो इसी से कन्वर्ट हो जाता है, बट लिख लेते हैं। हाँ, किसी को इसका फॉर्मूला मिला? No, sir. ओके चलो फिर मैं इसको हम प्रूव कर लेते दूसरा वाला। चलो मुझे ना तो प्रूव कर दो फिर मैं दूसरा वाला, या फिर इस वाले से निकाल दो दूसरा वाला, दो कर सकते हैं, ये प्रूव भी कर लेते हैं। वैसे प्रूव भी समझ में आ जाएगा कैसे, क्योंकि इसका वैसे प्रूव पता होना चाहिए। कई बार ना जैसे कि ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो पाता, बट इसका जो प्रूफ है ना, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मतलब हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा, बट जो इसका प्रूफ है उस टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और ये फॉर्मूला कई बार यूज नहीं हो पाता। तो प्रूफ इसका एक्चुअली में पता, प्रूफ से मतलब हाँ बोलो, n cot beta minus m cot c, n cot b minus m cot c। मुझे भी यही लगा था कि शायद n के साथ b आता है, उल्टा ऑपोजिट होता है शायद, ठीक है।
इसमें तो सेम है, देखो m cot अल्फा माइनस n cot बीटा, तो ये वाला थोड़ा सा याद भी रहता है। ये ना इसमें कुछ उल्टा मल्टीप्लाई होता है, मुझे भी इसमें याद है कि शायद n के साथ b आता है, तो इसमें मतलब इसमें कंफ्यूजन होता है ना, इसमें थोड़ा सेम, इसमें तो सेम है, देखो m cot अल्फा माइनस n cot बीटा, ये थोड़ा याद करने वाला भी इजी ऊपर वाला। तो इसमें कोई मैं प्रूफ बता दूं या ये क्लियर है सब लोगों को? सर प्रूफ बता दो। इसमें मैं किसी एक का प्रूफ कर देता हूँ, बताओ किसका प्रूफ कर दूं फिर? सर जो सेकंड वाला उसका प्रूफ बता दो। ओके, सेकंड वाले का प्रूफ में लेते हैं। तो फॉर द टाइम भी ये अल्फा एंड बीटा एंगल हम हटा देते हैं। So now, if this angle is theta, this angle will be 180 minus theta. This angle is B. So, if this is theta, so sum of these two will be theta. So this will be theta minus B. And if this is 180 minus theta, the sum of these two will be 180 minus theta. And if this is C, this angle will be 180 plus theta minus C. 180 minus theta. Minus theta minus C. So sum of these two angles should be 180 minus theta. सब लोग यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Now to suppose this is mx and nx. Suppose this length is mx and this is nx. Now to find the relation between m, n and theta, we have to apply here sine rule. And whenever we use sine rule in such triangles, first we need to identify which two side lengths are known. So this is known, and these two are unknown. But if we apply sine rule in this triangle and sine rule in this triangle, we can eliminate AD. AD will be common. So here we will apply sine rule in these two sides. We will write mx divided by sine of opposite angle, sine theta minus b, is equals to this side AD divided by sine of opposite angle, which is sine b. Similarly, we apply sine rule in this triangle with this side and this side. So nx divided by sine 180 minus theta is sine theta, we will simply write sine theta plus c. And AD divided by sine c. Everyone is clear with this step? So before using sine rule, we have to just fix our one triangle. So sometimes the student, what they do, they will simply write this side divide by sine of this angle, this side and this side divide by sine of this angle. Wrong ho jayega. Sine rule ke liye first we have to decide in which triangle you are going to use sine rule. At a time, we can only apply this rule in one triangle. So you have to first fix the triangle. Then you have to think on which two sides. Generally means we apply sine rule on two sides only. Rarely कहीं किसी केस में हम three side पे लेते हैं, ज़्यादातर हम two side पे आता है. So now then we have to decide in which two triangles ना, which two side we have to apply sine rule. तो सब लोगों को ये first step समझ में आ गया? Yes. So now we will divide these two equations. So we will divide LHS by LHS. So we'll get mx by nx, and that will be m by n. M by n. And this term will be in denominator and this term comes in numerator. So we will get sine theta minus b divided by sine theta plus c. And when we divide RHS, AD will get cancelled. We get sine c by sine b. सब लोग को ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया? Yes sir. Okay, so now I will cross multiply. When we cross multiply and expand, okay, so we'll get here m sine b, and when we expand this, we'll get sine theta cos c plus cos theta sine c. Here we'll get n sine c, and when we expand this, we'll get sine theta cos b minus cos theta sine b.
Now divide this equation by cos, whole equation by cos B cos C cos theta. When this term will divide this first term, cos C will get cancelled. So divide it by sin B, sin C, and sin theta. So when this term will divide our first term, sin B and sin C will get cancelled. We get cos C by sin C, and that will be cot C. When we divide this by our second term, sin B, sin C will get cancelled. Here we'll get cot theta. And this will sin C, sin theta will get cancelled. We'll get cot B. And here we will get cot theta. Now we have to move all the term containing cot theta on LHS. So that will be m cot theta plus n cot theta. So we can write cot theta will be common. We get m plus n. And then here we will get n cot B, and minus m cot C. Okay, so this is our final result. ये सब लोगों को समझ में आ गया? प्रूफ समझ में आ गया? Yes, sir. ये नोट कर लिया सबने? No, sir. सर आपने वो सेकंड लास्ट स्टेप कैसे लिखा है? सेकंड लास्ट यूलर स्टेप? सर इसके ऊपर यूलर स्टेप? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और sin a plus b का एंटिटी और sin a minus b का एंटिटी यूज कर ली. सर ये स्टेप आपने कैसे लिखा है? sin c upon sin b equal to यूलर स्टेप? यस सर. और ये इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया. इसको LHS को LHS से डिवाइड किया, RHS को RHS से डिवाइड कर लिया. तो कौन सी इक्वेशंस? ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. ओके सर. Done, sir. सो ये तो सारे ना बेसिक फॉर्मूले जो थे, जो हमें जो आते हैं. मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इन फॉर्मूले के बेस पे ही आते हैं, बट इसके अलावा वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है. मतलब ज्यादातर शायद ना, शायद जितने क्वेश्चन आए होंगे उसमें भी शायद 70% क्वेश्चन ना इन फॉर्मूले के बेस पे ही होते हैं. नाउ अदर देन दिस, first thing is you should know about ambiguous case. So now ambiguous case comes in this so एक जो हमने पढ़ा है 10th क्लास में और 9th क्लास में, see that so rules are SSS. I'm talking about congruence. When two triangles are congruent होता है ना, congruence rule. When by some rule then we'll say these two triangles are congruent. ऐसा rule था ना, SSS rule? Yes, sir. So SAS rule, ASA rule, and RHS अभी छोड़ दो. Okay, RHS rule चलो. So now by these 4 rules we say that two triangles are congruent. सब लोगों को ये रूल याद है ना, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये रूल यूज करते थे. Yes, sir. Okay, now if two triangles have same SSA, will the triangle be congruent? No, sir. Sir, मतलब not sure. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. So now this case is called as ambiguous case. Now when we have two triangles, or maybe in one triangle, maybe हम बोल सकते हैं in one triangle, इसका मतलब basically है, if we know two side length of a triangle and one angle, but that is not included angle, then can we draw a triangle?
If we know two side length and an angle which is not included one, then can we draw such triangle? Sir, triangle will not be unique. हाँ, triangle may be unique, may not be. हम ये भी श्योर नहीं बोल सकते कि यूनिक नहीं होगा, बट राइट नाउ अभी हम इसी को फाइंड करने की आएंगे. किसी किसी केस में यूनिक भी आएगा. So even if triangle is possible, then also we are not sure whether there will be unique triangle. Sometimes there will be unique triangle, sometimes there won't be. So that's why this is not congruence rule. अगर ये unique triangle हर केस में जब भी डिफाइन हो, जब भी triangle possible है and there will be only one triangle or unique triangle, then this would have been our one of congruence rule. But sometimes there will have one triangle, but sometimes we have two triangles also. That's why this is not congruence rule, and we call it as ambiguous case. तो ये केस हमें यहाँ पे स्टडी करना है इसमें कि इसमें क्या होगा. So let's say we have a triangle. Triangle के बदले भी तुम्हें पता नहीं triangle बनेगा भी नहीं बनेगा. So let's say capital ABC represents angles and small ABC sides है, वो तो है ही, हमें पता है. Now let's say we have small a, we have small b, but we have angle A. If we have small a, small b, and if we have capital C, then वो ambiguous case नहीं है, क्योंकि उस केस में तो हमें पता है कि जब भी triangle exist करेगा तो एक ही triangle होगा. So but इस केस में exist करने के बाद भी कुछ केसेस आते हैं जहां पे more than one triangle बनते हैं. तो now let's study this case. Now to find how many triangles will exist and when one triangle will exist and when two triangles will, and when no triangle will exist, we have to find some relation between these two, A, B, and these three, A, small b, and capital A. And the very simple relation will be using cosine rule. So we'll use here cosine rule. Cos A will be b square plus c square minus a square by 2bc. Let's cross multiply it. Here unknown, which term is unknown? See, we are given with small a. Suppose this is 5, this is 7, angle is 60 degrees. So which is unknown term here? Sir, C. C is unknown. So we have to solve for C. How many values we are going to get for C? If C will have only one value for all possible value of A, B, and A, then this will be a rule of congruence. Now let's try to find how many values we are going to get. So we'll get 2bc cos A is b square plus c square minus a square. C square minus 2bc cos A plus b square minus a square is equal to 0. Now let's solve for small c here. The small c is minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2. When we divide by 2, we'll get b cos A plus 1. So here we are going, 4 will get cancelled because this 2 when it goes inside the square, it will become 4. So here we are going to get b square cos square A minus b square plus a square. So 1 is a square. Now b square cos square A minus b square. If I take minus b square common, we get 1 minus cos square A, which would be sin square. Everyone is clear with this step? Yes, sir. So now, so we can have for some cases two values of C also, when this is some positive number, this is positive number. So in some cases we can have two values of C. That's why we call it as ambiguous case. अगर हर केस में C की एक ही पॉसिबल वैल्यू होती जब वो एग्जिस्ट कर रहा है, देन ये हमारा एम्बिगियस केस नहीं होता, ये यूनिक केस आता. ये एम्बिगियस केस का नाम इसलिए पड़ गया बिकॉज समटाइम्स वी आर गोइंग टू गेट two values of C. Now let's find in which case we are going to get how many values. So case 1, when angle A is acute, and we'll divide this case into subpart, and the first part is, so the term which is inside this square root is positive. So that means A is greater than B sin A.
Or simply I write a square is greater than b square sine square a. Now, if this is positive, then this term will be positive. पहले तो हम positive और negative ले लेते हैं, वो ज़्यादा easy है तो सोचने में. If this term is negative, how many triangles will be possible? Sir, 0. Zero triangle. Because C, the value of C will be imaginary. There will no real triangle is possible. We will say zero triangle is possible. So zero triangle is possible. Now let's try to find why zero triangle is possible. So here I can say sine A. This actually means sine A is greater than A by B, because A side lengths are always positive. Everyone is clear? This means sine A is greater than A by B. Yes, sir. और ऐसे भी लिख लेते हैं B sin A. B sin A is greater than A. एक ही बात है, ठीक है? B sin A is greater than. So now let's draw the triangle. This is our side length, given side length B. This, let's say this is angle A. This side length will be our A. So side angle opposite to capital A. This is A. So the side opposite to angle A will be small a, and this will be C. So we don't know C. So C we have to find. We know A, but now it is saying that A is less than B sin A. So what will be B sin A? This is B. This is angle A. So B sin A will be its vertical component. This length. This length is B sin A. This length is B sin A. Suppose even if I take C very small also, even like this. So this is B sin A, and A is less than that. So A is not even this length. A is shorter than that. So can I draw the triangle? Is it possible that we will be able to draw a triangle? No, sir. No, sir. A is less than B sin A. So there won't be any C length possible. A is fixed because we are given with A. So this is A, this length is A, this length is B, this angle A is given. But C, there is no real values of C here. So A has to be greater than B sin A. If A is exactly equal to B sin A, then we can easily draw a right angle triangle. But A has to be greater than or equals to B sin A. That is the first condition which this has to meet. AB and angle A has to meet. So everyone is clear with this first part? Yes, sir. Now what will happen when A is equals to B sin A? So in that case, so A is equal to B sin, this term will be 0. We'll get only one real value of C. And C is positive, B is positive, angle A is acute, so we'll get real values of C. So suppose if A is obtuse, in that case what will happen? This will be negative. C is equal to minus B, and that is also not possible. But if A is acute and this term is 0, then will be one triangle is possible. Everyone is clear? One triangle is possible? Yes, sir. And that triangle will be like this. This is A, this is B, and this will be our triangle. This length will be C, and this is A. A is exactly equal to B sin A. So that will be a right angle triangle in that case. सब लोगों को ये second part clear इसका? Yes, sir. Third part is, now A is greater than B sin A. In this case, we'll again take two subparts, that is A and B part. A, now A is greater than B sin A. That means this is positive. Now we have to verify whether B cos A is greater than this expression or this expression is greater than B cos A. So suppose in first case, we will find when B cos A is greater than this. So if B cos A is greater than this whole expression, which is root over A square minus B square sine square A. Squaring both sides will give B square cos square A is greater than A square minus B square sine square A. So when we move this term this side, we'll get B square is greater than A square.
So the first case, when b square is greater than a square or b is greater than a, in that case, so this term is greater than this, no? That means this term is greater than this. So we'll get two real values of c. Suppose this is 20, this is 10, we'll get 20 plus 10 and 20 minus 10. But if this value would have been greater than this, then in that case, how many real values of c we will get? Sir, 1. One real value. Because suppose this is 10, this is 20, we will get 10 plus 20 is possible, but 10 minus 20, c can never be negative. So in that case, we'll get only one real values of c. So here we'll say two triangles are possible. So in this case, we are going to get two triangles. That's why कभी-कभी हमें two triangle बन जाते हैं. अगर two triangle किसी भी केस में नहीं बनते ना, तो ये ambiguous केस नहीं होता. और वो हमारा इसमें कॉन्ग्रुएंस रूल में हम पढ़ते हैं इसको 10th क्लास में, बट हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये एम्बिगियस केस है. अब हम इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि व्हाई वी आर एबल टू गेट टू ट्रायंगल्स. दिस एंगल इज ए, दिस इज बी, and so now a is greater than b sin a, so this length is greater than b sin a. So in that case, we can draw a triangle like this, and we can draw a triangle like this. This length, see, this is a. The same length is, so this is, so these two lengths are exactly same. So now this length and this length are exactly same. So we, Yes, sir. so one possible value will be C1 like this. So this is our one triangle possible, and another possible value will be C2, and that will be like this. This is C, this is B, or B could be this also. Yeah, there are two possible values. यहाँ पे B कर लेते हैं. So if we consider small, see, we are given with small b, small a, and angle a. These three are given. Small b, small. In that case, we can draw one triangle like this and another triangle like this. Small a is fixed, small b is fixed, and angle is fixed. So everyone is clear with this part? Yes, sir. And second case, when b square is less than a square, or a is greater than b. So in that case, this is a, this is c, this is b, but a is greater than b. So a is too long. Suppose a is like this. One triangle we are able to make like this, but we can't draw another triangle like this because a is much bigger than b. A is bigger than b, no? Or if someone will say, sir, we can draw a triangle like this. In that case, angle A will be obtuse. We have already considered that angle A is acute. If angle A is fixed, angle A is 60 degree, how can we draw a triangle like this? Because angle A is fixed, it's 60 degree or 70 degree like this. So in that case, we can draw only one triangle, and this length will be small c. ये भी सब लोग केस क्लियर है? Yes, sir. So in this case, one triangle is possible. So हमने कौन सा कर लिया? First case के सारे केस हो गए ना? Okay, now obtuse. Similarly, obtuse भी ऐसे हो जाएगा. Obtuse में बस इसको नेगेटिव कर लेना है. सारे जो ट्रायंगल बनेंगे वो सारे ट्रायंगल इस साइड बनाते जाएंगे ऐसे ही. ऑब्ट्यूज के केस में बता दो, ये ऑब्ट्यूज क्लियर है? सेम सिमिलरली वैसे हो जाएगा. तो हम सेकंड केस भी कर लेते हैं फिर. ऑब्ट्यूज, सो इफ एंगल ऑब्ट्यूज मींस एंगल ए इज ऑब्ट्यूज. यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज ऑब्ट्यूज. Now again we will consider three cases. First case, a square is a is greater than b sin a. So first case is a is greater than b sin a. So if a is greater than b sin a, that means a is greater than less than a, na? First case. A is less than b. In this case, how many triangle is possible? Sir, 0. 0 triangle.
second case A is equals to B sin A. Now, even in this case also, if A is equal to B sin A, so what will happen? This will be 0. Angle A is obtuse. C is equal to B cos A, but C will be negative. That's not possible. Now, in this case also, how many triangle is possible? Sir, 0. 0. तो मैं इसमें ऊपर वाले को देखो, पहले ऊपर वाले को देख के समझ में आ रहा है या फिर ड्रॉ कर ले? ऊपर का मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ भी कर लेता हूँ. सो इन फर्स्ट केस ड्रॉ करके भी देख लेते हैं पॉसिबल क्यों नहीं है. In this case, angle A is obtuse, and this is small b, and see b sin A will be this length. इस लेंथ तो कोई मतलब भी नहीं यहाँ पे. वो इससे भी छोटा है, मतलब उसको पहुंचना यहाँ पे है, वो इतना ही छोटा है, मतलब कैसे पहुंच पाएगा? मतलब इससे भी छोटा लेंथ है. मतलब जो ऑल्टीट्यूड के बराबर भी होगा ना तो भी तब भी नहीं पहुंच पाएगा कि ऑल्टीट्यूड के बराबर. तो ऑल्टीट्यूड से भी छोटा है तो कभी ट्रायंगल बनेगा इस केस में? नो सर. सो यहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. सो 0 ट्रायंगल. नाउ सेकंड केस, इफ A is equals to B sin A वाला भी यही कॉन्सेप्ट, में तो कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं. इसी में केस ले लेते हैं इसका, तो ये कुछ अलग से कुछ है भी नहीं यहाँ पे. अगर वो उसके इक्वल भी हो गया तो भी नहीं पहुंच पाएगा यहाँ तक ना. यस सर. Now in second case, when A is greater than B sin A, इसके भी हम सब पार्ट ले लेते हैं. एंड द फर्स्ट पार्ट इज, हमने कौन सा लिया था यहाँ पे, वही लेते हैं. B is greater than A. When A is greater than B sin A, this term is positive. And now when B is greater than A, that means this term is greater than this. अगर देखो ये पॉजिटिव है, ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 20 हो गई. तो 20 प्लस 5, नहीं सॉरी, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा हो गया ना. नहीं, इसमें एक कुछ गड़बड़ क्या क्यों? B is greater than A. ये हमने B is greater than A कौन सा रिलेशन निकाला था? कौन सा किससे बड़ा है? ये बड़ा है ना इससे. ये वाला इससे बड़ा आ रहा है, बट ये अगर इससे बड़ा है तो ये तो वैसे भी हमने कुछ गलती हो गई वैसे इस केस में. इस केस में दोनों साइड स्क्वायरिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो नेगेटिव है. अगर एंगल ए ऑब्ट्यूज होगा तो स्क्वायरिंग, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है ना. यस सर. तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें. पर हम सोच के हम लॉजिकली कर लेते हैं ना. इसमें मतलब इतना कोई ऐसे रिलेशन से कोई ऐसा नहीं है. हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं B cos A is greater than this. सो मैं पूरा ऐसा एक्सप्रेशन लिख दूंगा. स्क्वायरिंग तो अलाउड नहीं होगा यहाँ पे, but we can write B cos A is greater than this term. Okay. ये allowed है. So now this term is greater than this. तो इसकी वैल्यू -5 है और वो इससे बड़ा है, मतलब ये तो और भी नेगेटिव होगा, यानी ये वैल्यू भी नेगेटिव आ रहा है ना. सर एक बार दोबारा बताना. नहीं, B कौन से तो नेगेटिव, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता इसमें एक्चुअली. ओके, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं. ठीक है, अब सही है स्क्वायरिंग. तो मॉड लगा के स्क्वायरिंग किया, अब वो रिलेशन आ सकता है ना. तो B is greater than A. इसमें ना मुझे रिलेशन में लिखवाना, मैं चाहता हूँ कि सिंपल सा रिलेशन आ जाए ये वो पूरा. तो इसमें सपोज हमने मॉड लगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका अगर मैग्नीट्यूड जो, अगर ये वैल्यू तो नेगेटिव मुझे पता है, इसका मैग्नीट्यूड अगर इससे बड़ा है, जैसे सपोज ना इसका मैग्नीट्यूड अगर जैसे ये -20 है तो हम मैग्नीट्यूड को 20 बना लेंगे. तो इसका अगर बड़ा है बट ये वैल्यू तो नेगेटिव होगी, तो -30 प्लस माइनस, और इसका जो मैग्नीट्यूड अगर सपोज 10 आ गया तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा इस केस में? नो सर. नहीं होगा. तो हमने ये लिखा यहाँ पे ना, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया है. मॉड करके तब तो स्क्वायरिंग अलाउड है.
तो हमें से मैग्नीट्यूड से मतलब है, इन दिस केस विल से जीरो ट्रायंगल इज पॉसिबल। इसको भी ड्रा करके देख लेते हैं, y, so we have a, b and c. Now it is saying that b is greater than, तो ये जो b है वो a से बड़ा है, मतलब देखो a b sin a से बड़ा है, मतलब इससे परपेंडिकुलर से बड़ा है, बट b से बड़ा नहीं हो पाया b, मतलब b बड़ा है, मतलब इस परपेंडिकुलर से तो बड़ा है, ऑल्टीट्यूड से बड़ा है, बट इस साइड लाइन से बड़ा नहीं है। तो इस साइड लाइन से बड़ा नहीं तो पहुंच पाएगा, ट्रायंगल बना पाएगा उसको? नो सर। ये बड़ा तो हो गया सफिशिएंटली, बट इतना बड़ा भी नहीं हो पाया मतलब कि ट्रायंगल बना पाएगा। तो इस केस में भी जीरो ट्रायंगल है। बी पार्ट ए इज ग्रेटर देन बी। इन दिस केस इसकी ये -10 है और ये 30, इस केस में ट्रायंगल बनेगा? यस सर। एक ट्रायंगल बनेगा -10 + 30 वाले केस में। तो हम लिख लेते हैं वन ट्रायंगल इज पॉसिबल। एंड ए बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, जो ए लेंगे बी से बड़ा है, तो ऐसे बी से बड़ा हो तो एक ट्रायंगल यहाँ पहुंच जाएगा ऐसा ना? यस सर। ये मैंने क्या लिखा, बी हुआ ना? सब लोगों को सारे केस समझ में आ गए इसके? यस सर। यस सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाना। ओके सर। सर एक और प्रीवियस। ओके सर। वैसे ना इसके जो मैंने इतने सारे केसेस बनाए हैं, ये मैंने समझाने के लिए बताया, इसकी एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी नीड नहीं होती है। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है जिसको बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट समझ में मैंने बताया कि कभी कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो इसलिए ये पता तो होना चाहिए, बट क्वेश्चन सॉल्व जो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। उसका एक शॉर्टकट मतलब दूसरा मेथड भी हमारे पास है ना। क्वेश्चन मैं बता दूं कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, या मतलब ये क्लियर है सब लोगों को? ये उसका दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, शॉर्टकट मेथड है मतलब। हाँ सर आपको बता दो। जैसे सपोज एग्जाम में ऐसे मान लो कि कुछ दिया हुआ हमें a = 5 दिया है, b = 7 दिया है, और हमें एंगल ए कुछ भी के बने 30 डिग्री सर, और हमें फाइंड करना। अब कोई बोलेगा कि सर मैं तो फिर कोसाइन कॉस के लिए पूरा रिलेशन बनाऊंगा, फिर इसमें पूरा कंडीशन, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है कि कॉस ए कोसाइन फॉर्मूला में सिंपली एंगल ए पर था, ये वैल्यू निकल जाएगी, ये पूरा ये निकाल लो। यहां से सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सी की वैल्यूज फाइंड कर लो, सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी की वैल्यू, सी की जितनी पॉजिटिव वैल्यूज आ गए सिंपली उतने आंसर होंगे। हमें पूरा सॉल्व करने की ये सारे कंडीशन की एक्चुअली में नीड नहीं पड़ती कभी भी। हमें क्या है कि बस कॉस ए का हमें फॉर्मूला यूज करना है, जब यूज करोगे तो सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसका मान लो स्प्लिट इन द मिडल टर्म से नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2 सी की वैल्यूज आएंगी, उसमें देख लो कितनी सी की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट में 2 आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया और लिख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से नहीं देखना है कि सी की कितनी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है और उतने हम बोलेंगे ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर सी की एक पॉसिबल वैल्यू आ रही है, एक ट्रायंगल पॉसिबल है। सी की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, 2 ट्रायंगल पॉसिबल है। सी की एक भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आ रही तो 0 ट्रायंगल पॉसिबल। तो हमें ना ये सारे केसेस एक्चुअली उतना कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले कि ए बी है, एंगल ए में हो तो क्या कंडीशन होगा, मतलब उसने अगर ये लेंथ नहीं दिया, ए और बी में पूछ लिया कि कंडीशन क्या आएगा, तब हमें वो कंडीशन की एक्चुअली में नीड पड़ेगी। बट अगर साइड लाइन जनरली क्या हो एग्जाम में, ए लेंथ दे ही देता है, वो बी दे देगा, एंगल दे देगा और फिर पूछे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, हमें तब इन कंडीशन की नीड नहीं है। क्वेश्चन जनरल सॉल्व करने में नीड नहीं है। सब लोगों को ये क्लियर है? यस सर। इसके बाद वाले भी कुछ फॉर्मुलेस हैं जो मेरे ख्याल से उस पे क्वेश्चंस 20% क्वेश्चन ही होंगे यार, मतलब उससे भी या उस कम ही होंगे, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर बता देता हूँ। तो फर्स्ट इज, so now we have
for the next type of properties and formula concepts, we should know concepts related to different centers: circumcenter, incenter, centroid, orthocenter, excenter. So, so first starts with centroid. कि centroid की ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, सबसे सिंपल है. So they sometimes they can ask you to find this is centroid G. So sometimes they will give you side length AB, AC, and ABC, and they will ask you to find AG. How to find AG? Then there is an Apollonius theorem, and that says that AB square plus AC square is equals to 2 times of AD square plus any one of these side length BD or CD, because both of them are equal. So by using this, we can because when they give you all the side length, AB is known, AC is known, BD is known, we can easily find AD. Once we know side length of AD, AG, G divides AD into ratio 1. Then we simply multiply it by 2 by 3, and then we'll give AG. So everyone is clear how to find these lengths, AG or GD or any of these lengths? There is one more relation, and that says that AB square plus BC square plus CA square multiplied by 3 is equals to 4 times of AD square plus BE square plus CF square. तो इसकी नीड नहीं पड़ती, बट ये इन्हीं इक्वेशन को ना ऐड डिवाइड करके ही रिजल्ट आता है. ये तो मतलब अगर ऊपर वाला याद है तो उससे निकल जाता है वैसे कि रिजल्ट. तो सेंट्रोइड में अगर कभी कोई लेंथ पूछ रहा है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला अपोलोनियस थ्योरम. फिर बस इसमें इसका ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, सेंट्रोइड का इतना ही कॉन्सेप्ट है. ये क्लियर है सब लोगों को सेंट्रोइड? यस सर. सर एक बार नोट करना है. Done, sir. Next is incenter. Incenter is intersection of angle bisectors. So let's mark with some other color. Let's say this is its angle bisector. B F. So the one property is, if we draw perpendicular from I to the sides, then all these perpendicular lengths are equal. And that means if we consider this as center and any one of these lengths as radius, and if we draw a circle, that circle will pass through like this. And we call this radius as in radius small r. And the formulas related to in radius is, first we need, let's say this point is D dash, this point is E dash, and this point is F dash. Now B D dash is equals to B D dash. Yeah.
BD dash is equal to S minus B, and that is also equal to BF dash, or you can say BD dash and BF dash. And similarly, AF dash and AE dash is equal to S minus A, and C D dash and CE dash is equal to S minus C. The second formula is delta is equals to S minus A tan A by 2. ये बहुत ऑब्वियस है, कोई बोलेगा सर ये कैसा है, क्योंकि ये नहीं डेल्टा नहीं है तो आर होगा ना, तो डेल्टा ये तो यहाँ से निकल जाता है, मुझे भी ना इसमें कंफ्यूजन आता है। देखो ये आर है, दिस इज आर, दिस एंगल बाय तो दिस विल बी a by 2 and this length is s minus a, so tan a by 2 is r by s minus a, tan a by 2 is r, हाँ ये होता है। तो r is s minus a tan by 2, s minus b tan b by 2 and s minus c tan c by 2. Next is small r is 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. And the next is डेल्टा इज इक्वल टू आर एस वैसे फॉर्मूला इसमें भी आता है कि इन रेडियस का ये, इन सेंटर का ये, सो बट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। एंड देन इतने ही फॉर्मूले इसका, एंड ये तो होगा डी डैश सिलेक्ट ना। नाउ वी शुड एबल टू फाइंड बीडी आल्सो, सो इफ वी नो ऑल द साइड लेंथ, हाउ टू फाइंड बीडी? So angle bisector theorem, we will use angle bisector theorem. So this length is small b, this length is small a, this length is small a. So here this total length is a and this is small b ratio small c. So this BD, you can say BD will be b ratio c, b by b plus c times of small a. This, because this is b ratio c. And similarly CD will be c by b plus c टाइम्स ऑफ स्मॉल ए। ये सब लोग क्लियर है? सब लोग इन सेंटर के फॉर्मूले क्लियर है? यस सर CD में CA अपॉन B प्लस C होगा क्या? हाँ पर सी होगा, सॉरी C by B plus C times of A होता है। हाँ वो मैंने C वही बोल रहा था, मैंने गलती लिख के। ये नोट कर लिया सबने? सर एक बार इससे पहला पेज करना। ओके सर। Then next is orthocenter. So orthocenter is intersection of altitude. So we have to draw perpendicular D. Is orthocenter. Now when even in this triangle also in center, we should be able to find all the angles also, because suppose now this angle is a by 2, if this angle is 90, we can easily find this angle.
सो ऐसे करके हम इसमें सारे एंगल्स निकाल सकते हैं. सो अगर कोई बोलेगा कि इसमें दूसरा वाला ट्रायंगल के साथ ना, सपोज ये दूसरे ट्रायंगल के साथ ये वाला भी एंगल हम निकाल सकते हैं, तो जल्दी बता सकते हैं ये वाला एंगल कैसे निकलेगा. इसमें हटा देता हूँ थोड़ा सा, बहुत कंजेस्टेड से हो रहा है, तो मैं ये 90 वाला हटा रहा हूँ. 90 वाला हम नहीं पूछ रहे. हाँ, इसमें मैं जैसे ये वाला एंगल कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कोई जल्दी से बता सकता है. See, this angle is c by 2. This angle is b. So what will be this angle? Sir, 180 minus b minus c by 2. This angle is b by 2. So can you find this angle now? Yes, sir. तो ये एंगल मेरे ख्याल से आ जाएगा, कितना आएगा, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए. 180 तो मिल ही रहा है, तो इसमें आएगा मेरे ख्याल से b by 2 हो जाएगा प्लस c by 2 ना, b by 2 प्लस c by 2 हो जाएगा. Yes, sir. दिस एंगल इज b by 2 प्लस c by 2. तो ऐसे करके सारे एंगल निकल जाएंगे. ये सब तो समझ में आ गए. तो इसमें सारे एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं. इवन ये सारे लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, वो दूसरे के ट्रायंगल जितने जितने भी साइड लेंथ बने थे सारे लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं. सब लोगों को वो भी क्लियर है कैसे फाइंड करना है. मैं एक बता देता हूँ, देखो कैसे सारे लेंथ निकलते हैं. इसमें से इसके पहले कैसे निकाल लेते हैं लेंथ. ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया, तो सिमिलरली कि ये सारे पार्ट तो निकल गए. ठीक है, अब अंदर वाले जो पार्ट बचे हैं, तो अंदर वाले पार्ट के निकालने के लिए इफ वी नो दिस, सपोज इन दिस ट्रायंगल, इफ वी नो दिस साइड लेंथ, वी नो दीज एंगल्स, ये एंगल्स हमने निकाल लिए. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड दिस साइड लेंथ. यूजिंग साइन रूल वी कैन फाइंड ऑल दीज साइड ना. ये दो साइड निकल जाएगा साइन रूल से. Yes, sir. एंड सिमिलरली इसमें भी साइन रूल से निकल जाएगा. तो मुझे ऐसे सबके फॉर्मूले याद नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं. कभी कभी निकालने के लिए कुछ भी आएगा किसी के टर्म में भी, वी कैन इजीली फाइंड. तो सब लोग इन सेंटर के मतलब ऐसे कुछ कभी कुछ आएंगे तो हम क्वेश्चन आएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना. नाउ ऑर्थो सेंटर, इन दिस आल्सो वी नो ऑल द एंगल्स, वी कैन फाइंड ऑल द साइड लेंथ. बट इसमें साइड लेंथ जैसे मुझे तो याद है, तो मैं डायरेक्टली साइड लेंथ बता देता हूँ क्या होता है. सो मैंने कैसे याद रखा है कि दिस इज ऑर्थो सेंटर H. व्हेन वी हैव टू फाइंड HD, so HD will be 2R cos B cos C. Because D is between BC, so that's why we write cos B cos C. Now when we have to write HE, that will be 2R cos C cos C. And similarly HF is equals to 2R cos A cos B. Now when we have to find HA, that will be 2R cos A. Now when this length from vertex to orthocenter, simply 2R cos A. HB will be 2R cos B. And HC is 2R cos C. So मैंने इस तरीके से ना इसके लेंथ याद रखे हैं इसके. So इसमें अगर किसी को अगर नहीं भी याद है तो हम डिराइव करते हैं, बट इसके बहुत इजीली याद हो जाते हैं, इसलिए मुझे याद है. बट किसी को लग रहा है कि सर इतने सारे फॉर्मूले याद करने हैं तो बहुत इजीली निकल भी आते हैं. नो कैसे निकलेगा? अगेन सपोज इन दिस ट्रायंगल वी नो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज B, so this angle will be 90 minus B. If this is 90 minus B, this is 90, this angle will be B. So now consider this triangle, and first we have to find this length. If this is small a, this is small b, this is small c. If this is b, this angle is 90, b cos b. This length will be b cos b. B cos c, sorry. So it's horizontal. Now we know this side length. We know all angles, and this is right angle triangle. We can easily find all the side length. इसके सारे ये लेंथ भी निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएंगे ना इसके. ये सब लोग क्लियर है कैसे फाइंड करने सारे लेंथ इसके. तो इसके इस तरीके से सारे इसके लेंथ निकल जाते हैं. बट इसके मैंने ये रिजल्ट याद रखा है, और किसी को अगर याद कर लो तो बेटर है, नहीं क्योंकि ये इजीली याद हो जाता है इसलिए याद किया. इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, बट इजीली याद हो गए मुझे, इसलिए मैंने याद किया.
बट इनके अगर मेथड भी याद रख लोगे तो सफिशिएंट है। ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वेक्टर्स में जिसमें मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था, सो आई डोंट नो मींस anyone of you remember that question or not. The question was, I have given you a triangle ABC, and then I said that there is a point H which is orthocenter, O which is circumcenter. Then we have to AO vector plus BO vector plus CO vector is equal to OH vector. Here lambda times, find the value of lambda. Everyone remember this question? Yes, sir. So then I told you there that this length is twice of this length. This length is twice of this length because this length is 2r cos A and this length is r cos. अभी हमने circumcenter किया नहीं, but ये circumcenter length r cos है। क्यों आएगा? Because this angle will be A, क्योंकि circumcenter में क्या होता है, यह सर्कल बनेगा, and ये अगर एंगल A है तो यहाँ पे एंगल 2A बनेगा, तो ये एंगल वापस बाइसेक्ट करेगा, A आ जाएगा। This length is capital R, so R cos A will be this length. It's horizontal component. This is R cos A, this is 2R cos A. इसलिए मैंने बोला कि ये 1:2 है। ये मैंने 1:2 का था, मैंने कहा इस प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना है। मैंने अलग से बता दिया था ना ये रिजल्ट। Yes, sir. तो वो मैंने यहीं से निकाला था। So, now if we join these 3 points, then another triangle will be formed, and this triangle is known as pedal triangle. Triangle DEF, सबने पहले सुना हुआ है pedal triangle? Yes, sir. Yes, sir. Triangle DEF is called as pedal triangle. Now we can even find all the angles and side length of the pedal triangle also. अब इसके अंदर जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, उसको एक्चुअली हम उसके अंदर कितने भी, कोई बोलेगा सर उसके भी बाइसेक्टर लेके ट्रायंगल है, कितने भी बनाते हो, जितने भी बनाते जाओगे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा के बनाओगे, तो जब भी बनाओगे ना उसके हम एंगल साइड लेंथ ऑलवेज ही फाइंड कर सकते हैं, जब भी जितने भी बनाते जाओगे। अब इसमें कितने पूछेगा, कहाँ कितने अंदर तक पूछेगा वाली बात है कि पेडल ट्रायंगल का भी मैं एंगल वैसे मैंने तो बता देता हूँ बच्चों को, साइड लेंथ भी बता देता हूँ। तो इसके जो पेडल ट्रायंगल्स के एंगल्स होते हैं, ये मैंने एच क्या लिखा है यहाँ पे, ये बी क्या है, ओके। So now let's find angles of pedal triangles. इसके हम पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये क्या कौन से एंगल होंगे। Now consider these 4 points. Are these 4 points concyclic? So this angle 90 degree, this angle 90 degree. If some opposite angles is 180 degree, then these 4 points will be concyclic. Yes, sir. If these 4 points are concyclic, that means we can draw a circle passing through these 4 points like this. Then there is one property, angles on same segment are equal. That means HF, this segment, it subtends angle, this angle, and it subtends this angle on the circle. That means these two angles will be equal. Yes, sir. This angle is A, this is 90, this is 90 minus A, so this angle will be 90 minus A. So one of these angles is 90 minus A, this part. Now, but we have to find this total angle, that will be one of the angle of pedal triangle. Now consider these 4 points. These 4 points are also concyclic because this is 90 and this is 90. Yes, sir. This is a segment, it subtends some angle here and some angle here on the circle. That way these two angles will be equal. This is 90, this is A, this is 90 minus A, so this will be 90 minus A. So angle will be 180 minus 2A, 180 minus, this angle is opposite to angle A. So that's why it is 180 minus 2A. So angle opposite to B will be 180 minus 2B and angle opposite to C will be 180 minus 2C. So angles of pedal triangles will be 180 minus 2A, 180 minus 2B and 180 minus 2C. सब लोग क्लियर है कैसे फाइंड किया एंगल्स? Yes, sir. So now
इट्स साइड लेंथ. साइड लेंथ के लिए फिर हमें साइन रूल लगाना पड़ेगा इसके. ओके, सो now let's find this length, DC. DC is opposite to B, तो B के टर्म में कुछ रिलेशन आ जाएगा. So now we have to find this length. We know this BD. BD is this angle is B. This angle, so this will be C cos B. So we know this side length. Let's find this angle first. Okay, so this angle was ये क्या था, 90 minus A था ना, 90 minus A. This was 90 minus A, and this whole angle is 90. So this angle will be A. This angle is B. This angle will be C. So now we have to find this side length. We know opposite angle. We know this side length and we know opposite angle. Let's apply sine rule here. We will write C cos B by sine C is equal to FD by sine B. So FD will be equals to C by sine C can be written as 2R. So R cos B sine B, and 2 cos B sine is R sine 2. मुझे फॉर्मूला याद है, R sine 2 है, R sine 2 भी R sine 2 से ऐसे. So sides are R sine 2A, R sine 2B, R sine 2C. ये भी सब लोग क्लियर है? Yes, sir. Now, my one question is, orthocenter of triangle ABC is equals to dash of pedal triangle D, dash of its pedal triangle. What will be dash? So in center. None of them. Orthocenter of triangle ABC is dash of its pedal triangle. Sir, in center. In center, because ये एंगल बाइसेक्टर, अभी हम देखा ना, ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो इट्स इन सेंटर ऑफ इट्स पेडल ट्रायंगल. कॉमन जनरल स्टेटमेंट है, किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर उसके पेडल ट्रायंगल के इन सेंटर के बराबर होगा. सब लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, sir. So there is one more statement, and that is circumradius of pedal triangle is half of circumradius of triangle ABC. अगर इसका जो circumradius है ना, अगर जैसे वो 10 आ रहा है, तो इसका circumradius सिंप्लीफाई हो जाता है. Circumradius of triangle ABC is twice of circumradius of its pedal triangle. तो ये स्टेटमेंट थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा. प्रूव कर दूं मैं इसको? प्रीवियस पेज कर देना. सर इस पेज में BD is equal to BA by B plus C कैसे आया था? क्योंकि देखो ये इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना, तो ये इसका जो रेशियो है ये B रेशियो C हो जाएगा. Yes, sir. अगर ये B रेशियो C और टोटल लेंथ A है, तो मैं इतने पार्ट को बोल सकता हूँ कि B by B plus C टाइम्स ऑफ A होगा. Okay, sir. ये नोट कर लिया कार्तिक है? यस सर. सो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है सब लोग क्लियर है? प्रूव कर दूं वो जो मैं बोला था, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC इज ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ इट्स पेडल ट्रायंगल. सर प्रूव कर दो, अगर छोटा है तो, वरना वैसे याद रख लेंगे. वैसे छोटा सा है, दो एक लाइन का ही प्रूफ है उसका. देखो हाँ सर. तो इसमें प्रूव करने के लिए ना we'll use sine rule. So if we consider this triangle, let's say now ये जो r sin 2 है, that is this length, that is side opposite to angle A. R sin 2B will be this and R sin 2C this. Now when we apply sine rule, so we'll consider this side length divided by sine of opposite angle. Let R sin 2A divided by
sine of opposite angle, and this angle is pi minus 2a, is equals to 2 times of its circumradius, and r dash is circumradius of this triangle. So everyone is clear with this rule? A by sine A is equal to B by sine B equal to C by sine A is equal to 2r. Now r is circumradius of that particular triangle. Now r dash is here circumradius of triangle this DEF. सब लोगों को ये सब clear है? Yes, sir. Now sine 180 minus sine theta, this term will get cancelled. So r is equals to 2r dash. सब लोगों को ये प्रूफ भी क्लियर है? Yes, sir. Next is circumcenter. सर्कमसेंटर में ना वैसे कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, ज्यादा हमें पता ही रहता है सर्कमसेंटर का, कॉमन है, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, वैसे मैं बता ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ऐसे है नहीं वैसे कोई प्रॉपर्टीज। This is triangle ABC, and let's say this is circumcenter. So इसमें बस ये याद रखना होता है कि when we draw a perpendicular, this will bisect and this angle will be A. उसके बाद कुछ भी, and this is circumradius, जो कुछ भी निकालना है, ये निकालना है तो r cos करके निकाल लो, and this will be, इसमें r के इस साइड लेंथ से भी निकाल सकते हैं कि because this total length is A, so this will be A by 2. A by 2 ये पता है हमें, तो A by 2 A के टर्म में भी साइड लेंथ आ सकते हैं, R के टर्म में भी आ सकते हैं, कि एंगल पता है ना, किसी टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे यूज करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्लियर है सब लोगों को? सर्कमसेंटर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सब लोगों को समझ में आ गई है? Yes, sir. एंड लास्ट इज एक्सेंटर। So this is triangle ABC. Now if we extend these sides, this is A, B, and C. Now, if we take internal angle bisector of A and external angle bisector of B and C, so let's draw internal angle bisector of A and external angle bisector of B and external angle bisector of C. They meet at some point, and we call, let's say we represent it I1. So I1 will be X center opposite to angle A. I1 is X center opposite to angle A. Now, if we draw perpendicular from this I1 to these sides, then all these lengths will be equal, and then that means a circle can be drawn like this, and this circle is called a X radius. Its radius will be called as X. This circle is called X circle, and this radius is called a X radius. This is X center. Similarly, we can draw one circle here and one circle here also. So center of this will be I2 and center of this circle will be I3. So this so this will be I2 and I3. Then there will be one triangle that is called a X radii triangle. I1, I2, I3. They will form a triangle like this.
I1, I2, I3, that will be again a triangle. And it's very strange that the circumradius of x, this triangle, is twice of circumradius of triangle ABC. Circumradius of triangle I1, I2, I3 is twice of circumradius of triangle ABC, which is again twice of circumradius triangle of its pedal triangle. तो pedal triangle का अगर 10 है circumradius, तो ABC का 20 होगा, I1, I2, I3 का 40 हो जाएगा. सो पहले तो ये क्लियर है सर्कमरेडियस सर्कमसेंटर होते क्या है, इनका इंटरनल और इनके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं, वी कॉल देम एज एक्स रेडियाई, एक्स सेंटर. दिस इज एक्स सेंटर एंड रेडियस कॉल्ड एक्स रेडियस. सब लोगों को ये क्लियर है? Yes, sir. So now let's say this point is D, this point is E. So the first property is property next में लिख लेते हैं. AD will be equal to AE, तो इक्वल होगा and that is equal to S. इसमें अगर यहाँ से जहाँ पे ये टच करता है, that is equal to semi perimeter. This is also equal to semi perimeter. First हमें ये रूल लगाते हैं. Now this is R, so this is semi perimeter S. This angle is A by 2. So next is R is S tan A by 2. ये होता है ना, तो R is equal to tan A by 2 is equal to R by S. सब लोगों को ये क्लियर है? सिमिलरली ये R1 होगा ना, R1 है, ये R1 है, R लिखते हैं. Similarly R2 will be equal to S tan B by 2. R3 is equals to S tan C by 2. Then we have R1 plus R2 plus R3 is equals to R plus, ये एक बार रिजल्ट देख रहा हूँ पैकेज में, क्या मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें. मुझे लग रहा है 4 कैपिटल R प्लस R है, इसमें किसी में एक में 4 होता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है. ये है कि कहीं पे ना, एक बार देखो ये रिजल्ट ऐसा कुछ है, एक बार ये रिजल्ट चेक करना. Then we have R1, R2. Then we have 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is equal to 1 by R. And then we have, in terms of delta, R1 is equals to delta by S minus A. R2 is equals to delta by S minus B. R3 is equals to delta by S minus C. Then we have S square is equals to R1 R2 R2 R3 plus R3 R1. I think इतने फॉर्मूले ही सफिशिएंट है. तो वो 4 कैपिटल R प्लस R मल्टीप्लाइड. अच्छा, ये मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन था, 4 किस पे मल्टीप्लाइड है, 4R प्लस R, बट ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे जितने फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है ये सारे. और मुझे लगता नहीं कि मेंस पे ना इस वाले इन सारे टिपिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे. एडवांस में तो आते हैं, इस पे एडवांस में तो क्वेश्चन मिल जाएंगे. मेंस पे मुझे इतना, एक तो मैंने मेंस से चेक भी नहीं करता जाता कि इतना आज के मेंस हो रहे हैं, तो मुझे डाउट है कि मेंस पे ना जैसे टिपिकल वाले पे चांसेस बहुत कम है. एडवांस में तो क्वेश्चन आते हैं इसमें, मुझे तो कई में तो वो तो है कि एडवांस क्वेश्चन तो मैं चेक करता हूँ, इस पे क्वेश्चन होते हैं एडवांस में. सो इतने फॉर्मूलेज ना सफिशिएंट. अगर किसने ये वाला फॉर्मूला याद नहीं किया, देखो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बोलता हूँ कि जिसने नहीं याद किया तो भी चल जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जितने फॉर्मूले लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो याद करने ही है, पता ही होना चाहिए. बट ये भी याद कर लो, छोटे छोटे से तो है ही. सब लोग इतनी थ्योरी इसकी इतनी है वैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की. ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी ना जैसे ये भी कोई एक्चुअली अच्छा एक चीज और है जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, उसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर.
and that is circumcenter and incenter. किसी को ये फॉर्मूला याद है? क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ r square minus 2r जाता है। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन किसी को प्रूफ चाहिए क्या इसके फॉर्मूले का? No, sir. Circumcenter and orthocenter. And that is circumcenter and orthocenter. इसका मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। r तो होता है यहाँ पे शायद 1 minus 8 cos से cos भी cos ही होता है शायद ना। मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लो, शायद यही है, इसका भी चेक कर लेना। Yes, sir. Yeah. cos भी cos ही। इनमें से किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए तो मतलब मैं मतलब दोनों को सेम ही, इनमें से किसी का चाहिए होगा तो मैं एक कर दूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो नहीं ये क्लियर है तो फिर ऐसे ही याद कर लो कि वैसे इसके भी क्वेश्चन आएंगे कम, इसके तो कभी एडवांस में भी नहीं आए क्वेश्चन। तो एक बार नीचे वाले का कर देना। प्रूव करता हूं डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। नेक्स्ट में कर लेते हैं। This is triangle ABC. So let's say this is orthocenter H. And this is circumcenter. Circumcentrally perpendicular bisector of side पे like रहेगा। So we have to find, now let's draw a circle. Now if we join these 2 points, let's say it in so OH so this total length will be R. Okay, and let's say we extend this also, and this point is A dash. So can I write AH into A dash H is equals to, and let's say this is point P and P dash, PH into P dash H। ये वाला सब क्लियर है सब लोगों को? ये प्रॉपर्टी ना सर्कल की, ऐसे लिख सकते हैं हम ऐसा। एक सर्कल एक बार दोबारा प्रूफ एक्सप्लेन कर दो, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी है ना, if two chords intersect at some point O, then OA into OB is equal to OC into OD। ये प्रॉपर्टी क्लियर है सब लोग सर्कल की? ये भी 10th क्लास की प्रॉपर्टी है। Yes, sir. Yes. So this is triangle ABC. H is orthocenter, O is circumcenter. First we join these 2 points and extend so that it will intersect with the circumcircle at P and P dash.
extend this AH so that it will intersect the circumcircle at A dash. Now can I write PH into P dash H is equal to AH into A dash H? ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. Now PH will be R minus OH and P dash H will be, this is circumradius, R plus OH. AH we know that is 2R cos A. A dash H. So just remember that mirror image of orthocenter about any side always lies on circumcircle. That means these two lengths are equal. इसको मैं प्रूव कर लूं, ये सब लोग क्लियर है, ये प्रॉपर्टी याद है? एक बार दोबारा स्टेटमेंट रिपीट करना. Mirror image of orthocenter about any side lies on circumcircle. That means this length and this length will be equal. Mirror image any side always lies on circumcircle. इसको प्रूव कर दो, ये सब लोग क्लियर है वैसे स्टेटमेंट? तो क्लियर है. ओके, दैट मींस ओके प्रूव कर देता हूँ. तो बस हमें ये प्रूव करने की जरूरत है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो तभी आ जाएगा. दैट मींस ये अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूं एंड इफ आई ज्वाइन दिस, नाउ आई प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल होंगे. Yes, sir. So now this is its altitude. This is 90 degree. This angle is C. So this angle is 90 minus C. Now in this segment, whatever it subtends angle here, it will subtend same angle here. This angle will be, okay, sorry. This angle is C. Angle C आ रहा है. हाँ ये C आ रहा है, तो ये एंगल वापस से 90 minus C हो जाएगा. Yes, sir. तो इसलिए ये प्रूव हो गया. तो यानी कि ये दो लेंथ इक्वल होंगे. Now this length is 2R cos A cos B, 2R cos B cos C. So this length will, total length will be 4R cos B cos C. When you multiply this, we'll get R square minus OH square, that is equals to 8R square cos A cos B cos C. We have to find OH. So OH will be root over this minus this. So R square minus 8R square cos A cos B cos C. So R is common, so we'll get 1 minus 8 cos A cos B cos C. ये समझ में आ गया सब लोग को? Yes, sir. तो इसकी थ्योरी मतलब से इतनी है, और ये फॉर्मूले इतने इम्पोर्टेंट भी शायद नहीं लगा, मतलब कमी आने के चांसेस है. इससे पहले जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे ना वो शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एक बार लास्ट पेज लगा दो. वैसे अब हमारी थ्योरी मतलब जितना हमने जो करना था, थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो गई वैसे ना. जो टॉपिक ये लास्ट टॉपिक जो हमने डिसाइड किया था करना है. Yes, sir. देन अब हम वैसे नेक्स्ट वीक से फिर क्या करना चाहते हो? जो डाउट्स वाले दिन तो डाउट्स करें, उसके बाद फिर हम फिर कैसे क्या करें फिर हम? एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो सर tan के वो कंडीशंस लिखवा देना. tan A plus tan B में जो कंडीशंस लगती है. ओके चलो मैं वो बता दूंगा.
और एक सर्कल का भी बताना था। वो तो मेरे ख्याल से वो तो छोटा सा है, वो तो दोनों 5-5 मिनट में हो जाएंगे, वो तो ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा उसमें। इनवर्स में सिर्फ यही बोल रहा हूँ ना, टैन वर्क टैन से ही हम मतलब सारे रिलेशन, मैं तो सिर्फ टैन से सारे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो सबके याद नहीं कर सकते, तो टैन वाला याद कर लो और उसी को यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिया ये? सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो सर, इससे पहले। सर इससे एक पहले और। तो इतना ढंग से डायग्राम बना नहीं, इसमें से बहुत ना कंजेस्टेड सा लग रहा है, बट इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, और वो पता होना चाहिए सर। ओके सर, ओके सर। तो सब लोग को अब वैसे क्लियर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूलेज, तो मतलब थ्योरी क्लियर है। तो देखो मैथ्स में ना, जब तक थ्योरी करने के बाद कम से कम पैकेज के जितने क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लो, उसके बाद मेंस के आर्काइव सॉल्व कर लो, उसके बाद भी और सॉल्व करो, तब थोड़ा क्लियर होता है। मतलब कम से कम ना 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ। तो जो थी पीडीएफ, उसमें देख लेते हैं कि रिसेंटली क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। मुझे इसमें डाउट है ना कि ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं होंगे वैसे तो। एक बार मेंस का पीडीएफ सब लोग खोल लो। मैं भी एक बार खोल रहा हूँ वो पीडीएफ का। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कोई जल्दी से बता सकते हैं कौन सा पेज पे आ रहा है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कौन से पेज पे आ रहा है? So 536. 536। 536 पे तो हिंट्स एंड सॉल्यूशन आ रहा है सर वो 548 पे है सर, 545। इसी के नीचे तो वो मेरे ख्याल से ऊपर आगे इंडेक्स में वो आते हैं ना कुछ, हाँ अलग सा होगा, जैसा समझ गया। तो इसमें 2020 में तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा इसमें। नहीं है, हाइट्स एंड डिस्टेंस पे 2020 पे इसमें क्वेश्चन नहीं है, वही मतलब बहुत कम क्वेश्चन आए ना शायद। मुझे मतलब मैं वो शायद मुझे बच्चों ने बोला कि शायद नहीं क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे हैं वैसे इससे। मुझे लास्ट ईयर शायद बच्चों ने किसी ने कुछ बोला होगा। नहीं 20 में है नीचे वो तो सॉल्यूशन हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ गए। इन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी मर्ज कर दिया शायद। तो 2019 के जो क्वेश्चन है वही सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन में 1 सब लोग ट्राई करो। एक बार सब लोग पहले ट्राई कर लो। ड्रॉ कर लेता हूँ पहले एबीसीडी में, एबीसीडी पॉइंट की बना है एसी डिवाइड्स बीएम डिवाइड बीएम इनटू 2:1, 0 सेंट्रोइड हो गया। then cos GOA, cos GO being the origin, OA, GOA फाइंड करना है। तो मतलब जी को, ये तो क्वेश्चन इजी लग रहा है।
तो सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, फिर इसका एंगल निकल जाएगा। ये तो वेक्टर वेक्टर क्वेश्चन लग रहा है वैसे। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन किया है इसमें। इसमें पहले जी निकल जाएगा ना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस जी कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये वाला वेक्टर निकल जाएगा, ये वेक्टर निकल जाएगा, और फिर ये वाला एंगल आ जाएगा। इसमें कोई सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हुई नहीं है वैसे। सब लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ये सेकंड क्वेश्चन, द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी। एंगल्स एपी में है अगर, तो पहले ना बी एंगल निकल जाएगा, बी 60 डिग्री आएगा, फिर तो एक 60 होगा, एक 60 माइनस एक्स, 60 प्लस एक्स। So angles will be 60 minus x, 60 and 60 plus x. Is that AP, and A ratio B is 1 by root 3, C is 4, then the area of this triangle is, इसमें ये एंगल था A, this is B and this is C. Okay, तो हम इसमें लगा लेते हैं साइन रूल। So A by sin A is equals to B by sin B is equal to C by sin C। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें a by b का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से। तो हमें x की, इन दोनों को इक्वेट करें तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। एक बार सब लोग फाइंड करो, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है। सर x की वैल्यू 30, x इज इक्वल टू 30। हमें फिर फाइंड क्या करना है इसमें, एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। x अगर निकल गया हमें तो ये एंगल निकल जाएंगे, 30 डिग्री तो 60 रहेगा और 90 डिग्री। ओके, तो हमें ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, सी बी 60 एंड ए 30। सी की वैल्यू 4 है, और इससे हमें ये लेंथ भी निकल जाएंगे, क्योंकि अगर ए को मैं एक्स लूंगा तो बी रूट 3x हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू एक्स, तो बी रूट 3x। पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसकी साइड लाइन निकल जाएंगे तो एरिया निकल जाएगा ना। यस सर, सब लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2? यस सर। 3 एक बार सब लोग ना 2-3 सॉल्व कर, एटलीस्ट 3 और 4 दो सॉल्व कर लो, उसका एक सब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व।
किसी का थर्ड हो गया सोल्व क्वेश्चन? लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, तो ऐसे कर लेते हैं ना, एक को ए ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल ही ए बी सी कट कर लेना है, एक को ए ले लेते हैं, एक को ए माइनस डी ले लिया और एक को ए प्लस डी ले लेते हैं। इसमें बेसिकली ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा, इसके अपोजिट वाला एक इसका ऐसा ऑर्डर होगा। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल, तो सपोज इसके जो एंगल है, अगर मैंने इनको ए, तो ये 2a होगा, ये बी ले लिया, सी एंगल 2a कर लिया। Then the ratio of length of the sides of this triangle is, the ratio of length of the sides of this triangle, the length of the side of the triangle in AP, length AP में ले लिया हमने, and the greatest angle double the smaller, the ratio of length of the side of this triangle is, okay, इतना ही given है ना, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, then sin A minus d by sin A equals to A plus d by sin 2A. So इसमें एक sin A कट जाएगा, we'll get A minus A plus d by A minus d is equals to 2 cos A. और आएगा A by sin 3A। हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ये फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करते हैं, तो इससे आ जाएगा sin 3 by sin A, sin 3 is 3 sin A minus 4 sin cube A is equal to A by A minus D। यहाँ पे हमें तीन अननोन आ रहे हैं, A D and एंगल A। ओके, एक के टर्म में तो आ ही सकते हैं ना, तो अब हम यहाँ से किसी कौन से को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो इसको लिखते साइन स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू पुट कर लिया, इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, सो a प्लस डी बाई ए माइनस डी का होल स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कैलकुलेशन। तो यहाँ से हमें ए डी में एक रिलेशन आ जाएगा, हमें ख्याल से ए बाई डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ए और ए बाई डी, क्योंकि जितने भी टर्म है ना ए बाई डी वाले फॉर्म के हैं, क्योंकि इसको भी अगर मैं ए बाई डी से डिवाइड कर लूंगा, फिर डी से कर, तो सब ए बाई डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। पहले ए माइनस डी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए माइनस डी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, सॉल्व करो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा, we'll get 4ad is equals to a square minus ad, a जीरो तो नहीं, देख 5d is equals to a, यहाँ से ये आ रहा है a is equals to 5d, यस सर, और यहाँ पे हम पुट कर लेंगे a is equal to 5d, तो ये बन जाएगा 4d, यहाँ से d में आ जाएंगे, तो 4 एक तो आ जाएगा 4 और इसमें पुट करेंगे a is equal to 5d तो 6 और a is equal to 5d, 4 रेशो 6 रेशो 5 आ जाएगा। यस सर, उसको किस ऑर्डर में लिखना है तो हमें पता ही नहीं है वैसे, बट 4 5 6 ही रेशियो होने चाहिए, ऐसा ऑप्शन एक ही है ना 4 5 6। ये क्वेश्चन सपोज समझ में आ गया? यस सर, एक्चुअली मेरी और क्लास है 6 o'clock, तो उन्हें यहीं पे एंड कर लेते हैं क्योंकि वो खुलने में टाइम लग जाता है।
तो सब लोग ना इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी पैकेज के जितने क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो। और किसी पास अगर कोई और बुक है, अरिहंत है या संगीत है, तो किसी बुक से ना उससे भी कुछ क्वेश्चन, उसमें तो बहुत क्वेश्चन होते हैं, बट जितने कर सकते हो 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे कर लो। पैकेज में मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन है, उसके बाद अरिहंत से 15-20 और कर लो वहां से। चलो मैं एंड कर रहा हूँ।